Okay. So I have taken the phi of n. We have got n. Okay. Then we have got phi of n. Then we have got the public key. I have assumed e is equals to 7. That is, the value should be that the value of e should satisfy the conditions. Then the public key we have got. Now the fourth one, I want the private key. I want the private key given by D. I want the private key given by D. You know, previously, without using the congruence, congruence means this. Without using the congruence, directly I have shown you equal to sign. Okay. Now, with the congruence, either you go with the equal to sign or you go with the congruence. Either of the case. Now, we'll see if I go with the congruence, the equation becomes, the equation is D into E. D into E congruence 1 mod of phi of n. 1 mod of phi of n. This is the condition which has to be satisfied. So it is D into E congruence 1 mod of phi of n. Now we'll try to see how do you solve this congruence equation. Okay, congruence equation, how do you solve this? The previous also you can take, but today I will be explaining you with this, with the congruence, okay? I will rub this below portion. Now the approach is that we have to find the value of D. So it is D into the value of E is 7, congruence with 1 mod of it is 160, mod of 160. Okay, this is nothing but 70 congruence 1 mod of 160. Okay, now congruence का मतलब ये होता है कि mod this 160 mod 160 can be on both the sides. Okay, can be on both the sides. So I want the mod of this LHS, mod of 160 on the LHS in such a way that it should come 1. Okay, so I have to multiply 7 with D in such a manner that multiplication mod of 16 should give me 1. That means the remainder should give me 1. So the remainder should give me 1. So the approach is that if it is I want the remainder as 1, then you have to take the multiples of 60. That is 160 into 1 equals to 160. Now if I am doing 160 plus 1, then it becomes 161. So that means 161 mod of 160. What is the value of this? Any one of you tell me the value? Yes, 1. So I want in such a way that it should be either 160 plus 1, otherwise 160 into 2. What is 160 into 2? It is 320. It is 320. Okay, so 320 plus 1. 320 plus 1, that is 321. So what is 321 mod of 160? 1. Tell me that. Yes. So I want the value should be 161 or 321 or 160 into 3. That is 3 zeros are 0, 6 threes are 18, 3 ones are 3, 4. 480 plus 1 is equals to 481. So I want the values in such a way that it can be either 161, 321 or 481. 161, 321 or 481. Okay. So if I want such values, then you have to multiply the 7 with the number such that either I should get 161, 321 or 481.
161, 321 or 481. Okay. Now if I want such type of values, then you have to multiply 7 with the number. So tell me 7 into how much will either give you 161. अगर ये नहीं मिलता तो 321. अगर 321 नहीं मिलता तो 481. I have to go from the basic 361. So tell me 7 into 23. 7 into 23. Yes, yes. So it is 7 into 23. 7 into 23. Now if I have to 7 into 23 congruence. Now here D will be the same. I will just write down the D value. The D as same D as it is. Congruence. मैंने equal to नहीं किया इसको, मैंने congruence ही लिखा है. So it is 7 into 23 into D or 23D. Congruence 1 mod of 160. 1 mod of 160. Sorry. It is wait. I have to multiply 7 into 23 to get 161. Okay. So ultimately I want the value of D. So I have to multiply LHS and RHS by 23. So it becomes 7 into 23D congruence 23 into mod of 160. 23 mod of 160. 23 mod of 160. Okay. That means I have to multiply 7 with 23 on LHS as well as 23 on the RHS. So it becomes 161 D congruence 23 mod of 160. So if I have to make this equal, then both the side has to be multiplied by mod 160. So here it becomes 161 mod of 160 into D equals to 23. So what is 161 mod of 160? It is 1. So 1 into D is equals to 23. That means D is equals to 23. D is equals to 23. So I am repeating again, please pay attention. D into E congruence 1 mod of I of n. D into 7 congruence 1 mod of 160. That is nothing but 70 congruence 1 mod of 160. Now 1 mod of 160. I want the mod of 160. So mod of 160 has to be multiplied on both the sides if I want to remove the congruence. Okay. So if I want mod of 160 on LHS, the value should be 1. The value should be 1. That is more important. The value should be 1. Okay. So if I multiply 7, so how do I get 1 as a remainder? You will get 1 as a remainder if it is 161 into 1 plus 1. Plus 1 is important because remainder 1 I want. If I want remainder 2, for example, I am taking about the example. If I want remainder 2, then it is 160 plus 2. Okay. So you can get either 161, 321 or 481. Agar if I am not getting 161, if I multiply 7 with some number, if I am not getting 161, you should try with 321. You should multiply 7 with some other number so that you can get 321. Agar 321 bhi nahi mil raha hai, you should try with 481 and so forth. So what I mean to say that you should start with 161. If it is successful, now in this case it is successful. So that is why I am multiplying 7 with 23 so that I am getting 161. So 7 into 23 D congruence 23 mod of 160. Now I have to remove the congruence sign. So it is 161, that is 23 into 7, 161 D congruence 23 mod of 160. Now I can remove this sign congruence. Then in that case both the sides should be mod of 160. Now 161 mod of 160, because this will give me remainder 1. I am interested for 1 only. So 161 mod of 160 D is equals to 23. Is equals to 23. Then ultimately I am getting D is equals to 23. Ultimately I am getting D is equals to 23.
Is it clear to everyone how to get 23 and what calculations you have to do? This is the first time I am explaining you with the congruent sign. नहीं तो हम पहले directly equal to sign ले रहे थे. But here I have shown you that how you have to get the values of the remainder one and what adjustment you have to do. Okay, what adjustment you have to do. This is important. This is important. So ultimately I have got, and I have got D is equals to 23. I have got D is equals to 123. I have got D is equals to 23. Shall I proceed further? Shall I proceed further? Yes, sir. So ultimately the private key is D, which is given by D comma N, which is given by D comma N. So it becomes D value is, the value of D is 23 and N is 187. So you have got private key as well as public key. You have got private key as well as public key. Okay, you have got, just a minute. Yes, we have got the private key as well as public key. Now we are going to get the value of ciphertext as well as message given by capital C and capital M. Capital C and capital M. Now the calculations is going to be a tedious one because we have taken the larger number. And how do you solve such calculations? Because ultimately we have to use the Chinese remainder theorem as well as Fermat's theorem. Chinese remainder theorem and the Fermat's theorem. Okay, Chinese remainder theorem and Fermat's theorem. So before I proceed further, one important thing. Before I proceed further, I want everyone to write down the note. Write down the note. Private key मिला आपको, इसके बाद एक note लिखो. Write down the note. Write down the note, and the note is related with the D. The calculation to get the value of D. So the note is related with the D. Write down using Chinese remainder theorem, using CRT, using Chinese remainder theorem, we know that, write down this one, M1 x1 congruence with 1 mod of x1 mod of m1 mod of m1. Keep this into the box. M1 x1 congruence 1 mod of m1. Okay, mod of 1. Now this, using this particular formula, I haven't explained you in the CRT. That is a Chinese remainder theorem. Okay, but one of the students from your class, okay, he has solved this by using this particular equation. I will be sharing his note, okay, by using the CRT. Now मैंने इसके हिसाब से explain नहीं किया because I found that the method which I have explained you using the Chinese remainder theorem, that is more easy for you to understand as well as to get the answer. Okay, but why I am taking here right now in this RSA, because to get the value of D, I have used a similar equation.
because on the right hand side, if you see properly, it is 1 mod of m1. 1 mod of m1. Okay. So by using this particular formula, I'll be sharing you the solution of one of the problem by using the CRT. Okay, in which we have used this equation. Just go through that. अगर आपको मैंने जो मेथड पढ़ा है वो अगर समझ में आए तो you will be able to understand this also by using this formula. Okay, so that thing I will share in the classroom. Okay, in the study material. So using CRT, we know that m1 x1 congruence with 1 mod of m1. Now I will explain you with an example. Now I will explain you with this an example. Write down example in the same thing in the note. Example, if it is 77 x1 congruence with 1 सर हाँ ब्लर है सर थोड़ा ब्लर है. ब्लड आ रहा है. ओके वेट सर नोट पासून डिक्टेट करा ना. ओके आई विल रिपीट. नाउ अभी ब्लड आ रहा है क्या? क्लियर है? सर ब्लर ही है. ब्लड ही है. हाँ ठीक है. मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर. हाँ ठीक है. नाउ पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग. ओके, मैंने नोट में लिख के दिया है यूजिंग Chinese remainder theorem, that is CRT, we know that m1 x1 congruence with 1 mod of m1. Now this equation I haven't explained you while going through the CRT problems. Okay, but one of your colleague, that is I think Shubham, someone of you have solved this by using this particular equation. So I will share his solution with everyone. You just go through that. मैंने जो पढ़ा था अगर आपको वो समझ में आया है, the way I have explained you about the CRT and the approach to solve that particular CRT, मैंने इसलिए लिया था because that was the easy as compared with this. Okay, as compared with this that was easier one. So if you have understood my way of solving that problem, you will understand by this also. Okay, just go through that. But for time being, I will explain you how do you solve this equation with an example. If it is 77 x1 congruence 1 mod of 5, 77 x1 congruence 1 mod of 5, ये टाइप का प्रॉब्लम अभी मैंने जब डी कैलकुलेट किया था, डी की वैल्यू 23 हमको जो मिली थी वो ये इक्वेशन के हिसाब से हमने सॉल्व किया था. लेकिन मैंने अभी अलग से आपको लिख के दिया है नोट में कि बाय यूजिंग CRT एंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन हाउ डू यू सॉल्व सच टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन वेयर यू हैव गॉट with the example I have taken 77 x1 congruence 1 mod of 5. अभी ब्लड दिख रहा है स्क्रीन या अभी ठीक लग रहा है? ठीक है, अभी ठीक है अभी सर. थोड़ा ठीक है. यस. नाउ सी इसलिए अभी देखो 77 x1 congruence 1 mod of 5. Okay, now I have to solve this. Now I want the value in such a way that, now see here, how do you solve this? I want to, this is 1 mod of 5. 1 mod of 5 means it is a congruence. I can multiply left hand side as well as right hand side by mod of 5. So if I multiply, then this becomes 77. x1 is unknown. I want to find the value of x1. क्योंकि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में भी हमको x की वैल्यू निकालनी थी. So x1 is unknown. Okay, so what I will do, 77 mod of 5 into x1 congruence with 1 mod of 5. यहाँ पे भी mod of 5 आप कर सकते हो, but I have taken only on the left hand side. Okay, multiplied by mod of 5. So it is, tell me the value of 77 mod of 5. 2. Yes, it is 2 into x1 congruence with 1 mod of 5. 1 mod of 5. Okay, now see here, I want the value of x1. Now tell me now I am taking the 5.
So it is 5 ones are 5. I want remainder 1. That means 5 ones are 5, so it should be plus 1. So it should be 6. Then only I will get remainder 1. Otherwise, 5 into 2, that means 10, plus 1, that means 11. 5 into 3, that is 15, plus 1, that is nothing but 16. So मुझे 6 चाहिए या फिर 11 चाहिए या फिर 16 चाहिए. ये नंबर कब चाहिए? जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ. जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ. तो मुझे बताओ 2 into how much will give me either 6 or 11 or 16? 3, sir. Yes, 3. So can I say multiply 3 on left hand side as well as right hand side? So it becomes 2 into 3 x1 congruent 3 mod of 5. 3 mod of 5. 3 mod of 5. 3 mod of 5. Okay. So it is 3 to the 6. 3 to the 6. So 6 x1 congruent 3 mod of 5. 3 mod of 5. Now again, now here it is 6. X1 is unknown. Here it is 6. X1 is unknown. Again I can say if I multiply left hand side and right hand side by mod of 5, because it is a congruence, I can multiply both the sides with mod of 5 many times. Because it is congruence, I can multiply by many times. So if I have to multiply, I'm writing down here, then can I say it is 6 mod of 5 into x1 congruence 3 mod of 5. 3 mod of 5. Tell me 6 mod of 5 is 1. yes. और हमको भी वही चाहिए था ना, हमको 1 चाहिए था, तो 6 mod of 5 is 1. So it is 1 into x1 congruent 3 mod of 5. So can I say if I want to remove the congruence into equal, can I say x1 is equals to 3? X1 is equals to 3. X1 is equals to 3. So this is the approach. To get the value of x1 whenever you have such type of equation. Which type of equation? I have taken one example. The example says 77 into x1 congruent 1 mod of 5. ये मैंने example इसलिए लिया so that you will have a separate note to understand how do you solve this. So how do you solve this? Because why I have taken this example? Because such type of equations we are facing in finding the value of d. और जो अभी हमको मिला है d की वैल्यू 23 भी हमको कैसे मिली? क्योंकि हमने ये हिसाब से सॉल्व किया. Because we have solved by in this method. I hope you have understood this. तो जो भी मैंने रेड कलर में लिखा है ये सब आपको नोट में लिखना है for your understanding. Again I am repeating Chinese remainder theorem. By using such type of congruence equation, I will be giving you as a study material in your classroom. Okay? आपके एक ही स्टूडेंट ने जो सॉल्व करके दिया था by this method, that particular solution I will share you in the classroom, in the study material. I hope this is clear. Shall I proceed further now? Shall I proceed further? Yes, sir. Yes. I'm going to rub this now. जिनको ये प्रॉपर्ली समझ में नहीं आता, afterwards you can see my recording, video recording, and you will be able to understand this. Yes. The next thing is now we want the ciphertext. हमको पहले पब्लिक की मिली, बाद में प्राइवेट की मिली. Now I am interested in the ciphertext, and the ciphertext is given by c is equals to m to the power of e mod of n. So this is the formula to get the ciphertext. Okay. Now suppose I assume m is equals to 5. Now assume m is equals to 5.
You can take any smaller number. You can take any smaller number. I am taking m is equals to 5. With m is equals to 5, t is equals to 5 to the power of e की वैल्यू क्या है 7. 5 to the power of 7 mod of 187. Mod of 187. Yes, mod of 187. 5 to the power of 7 mod of 187. Okay, now we'll see how do you solve this. We'll see how do you solve this. Please get the value of 5 to the power of 7 using Calc C and tell me the answer. 5 to the power of 7. 78125. 78125 mod of 187. Tell me the answer. You should be able to do this on the Calc C. I will show you how to do this. सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है 78125 divided by 187. The answer comes to be 417. The answer comes to be 417. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 417. एक्चुअली आंसर आता है 417.78. लेकिन मैं अभी डेसिमल नहीं लूंगा. अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा? I will take 187 into 417 and the answer comes to be. Sir, remainder is 146. हाँ 146. That is right. लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा उनको मैं बता रहा हूँ कैलसी पे कैसे करना है. 78125 डिवाइडेड बाय 127 करोगे तो आंसर आता है कैलसी पे 417.78. तो हम क्या करेंगे 417 इंटू 187 करेंगे और इसका आंसर आता है 77979. और बाद में हम क्या करेंगे 77979 को माइनस करेंगे. सॉरी 78125 को हम माइनस करेंगे इसमें से एंड द आंसर कम्स टू बी 146. बराबर है? हाँ सर. हाँ यस यू आर राइट. ओके, आप 7-8 में से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस को करो, irrespective of negative sign, whatever the number you get, that is your answer. That is the remainder. वो remainder क्यों है? Only because we can write down 78127 as, I am writing down here. हम उसको कैसे लिख सकते हैं? We can write down 78127 as 187 into 417 plus 146. और ये जो 1 plus 146 है, that is actually the remainder. Okay, and mod of 187. So this is your remainder and this is the answer 146. ये लिखने की जरूरत नहीं है. Just for your understanding, you write down because ultimately I am interested in the remainder. और रिमाइंडर कैसे निकालना है मैंने अभी आगे बताया. जो रेड में लिख के दिया है, रेड में जो लिखा है वो आप साइड में लिख सकते हो फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर योर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग. दैट इज 78125 divided by 127. You will get the answer on the Calc as 417.78. डेसिमल नंबर नहीं लेना है, होल नंबर लेना है. तो 417 into 187 आपको आंसर आता है 77979. अब ये 77917 ये माइनस करना है किसमें से 78125 में से, तो आपको आंसर आता है 146. मैंने ऐसा किया तो इसका आंसर है नेगेटिव. But I am saying irrespective of the sign, you have to take the number. So it is 146. It is 146 and this is the answer for C. If it is okay, shall I rub this? Shall we proceed further? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. Now see here, I have got the value of C, that is 146. Now at the decryption side, I want the value of M. Now how do you get the value of M here? M is equals to C to the power of D mod of
C to the power of D mod of n, mod of n, C to the power of D mod of n. I'm going to rub this. So I want to find the value of m now. So C की वैल्यू क्या आई थी? 146. 146. D की वैल्यू है 23. Mod of n की वैल्यू is 187. 187. Now see, how do you solve this now? This is important. How do you solve this? This is important because it is to the power of 23. ये सब प्रॉब्लम आने वाले थे क्योंकि मैंने P की वैल्यू और Q की वैल्यू लार्जर ली, तो ये सब प्रॉब्लम आने वाले. Okay. Now how do you solve this? Pay attention, all of you. Okay. 146 to the power of 23 mod of 187. How do you solve this? Pay attention. Now this can be written as, it is 146. Now I can split this now. I can split this. Okay. 146 to the power of 2 in bracket to the power of 11, so 2 into 11 becomes 22. Okay. Into 146, so that it becomes now 146 power of 23. ये पूरा mod of 187. ये ऐसा क्यों करना है? Only because of one reason. You can write down here in the bracket because write down A into B mod of C equals to A into B mod of C equals to A mod of C into B the whole bracket mod of C. So if it is AB mod of C, this can be written as A mod of C into B mod of C. I am repeating again. A into B mod of C can be written as A mod of C into B the whole square bracket mod of C. और ये क्यों करना है? Because I have to split this and I have to solve this manually. अभी ये तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते थे. Your computer can directly give you the answer. लेकिन थ्योरी में हमको मैन्युअली ये करना है. हमको दिखाना है एग्जामिनर को कि yes, manually I can solve this. And how do you solve this? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि I have to split this 146 to the power of 23 into 146 to the power of 2 the whole bracket into 11 into 146 mod of 187. ये इसलिए करना है because I have to use this formula. So I can write down. सर हाँ सर पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में आपने A इंटू बी मॉड एन का फॉर्मूला ये दिया था, A मॉड एन इंटू बी मॉड एन द स्क्वायर ब्रैकेट मॉड एन. क्या लिख के दिया था मैंने? A mod n into B mod n हाँ the whole into mod n. हाँ ठीक है ना, ये भी चलता है, ये भी दोनों चलेगा. लेकिन हाँ दोनों चलेगा. बोथ आर राइट बट आई विल टेक दिस बिकॉज आप ये भी ले सकते हो. ये भी राइट है और ये भी राइट है. दिस इज द वन वर्जन बट यूजिंग दिस वर्जन आई एम राइटिंग नाउ. क्योंकि अगर मैं यही लिखूंगा ना, इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन मॉड एन नहीं लिख रहा हूं मैं. आई एम जस्ट राइटिंग डाउन A mod C B mod of C. लेकिन अल्टीमेटली हमको मॉड एन बाद में करना भी है, तो मैं कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ. यू कैन टेक दिस ऑल्सो और यू कैन टेक दिस ऑल्सो. ओके सर. हाँ, नाउ आई वांट एवरीवन टू हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन नाउ कि हम आगे की कैसे सॉल्व कर रहे हैं. नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ 146 टू द पावर ऑफ 2. यू कैन डू ऑन द कैलसी. टेल मी द आंसर.
21316. Yes. So it is 21316. Now pay attention what I am doing now. 146 to the power of 2 का मैंने लिखा है 21316 mod of, अभी मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, mod of 187, mod of 187, mod of 187, the whole power of 11 into 146, ये और बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट mod of 187. अगर मैं गलत कर रहा हूँ या फिर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछना. This is by using that formula. Now I want the answer. 21316 mod of 187. Give me the answer. मैंने अभी पहले आपको बताया था कैसे करना है. कैलसी पे बताओ. I will wait for everyone. आपको क्या करना है? 21316 को डिवाइड बाय 187 करना है. आपको आंसर आएगा डेसिमल पॉइंट में. आपको होल नंबर लेना है. वो होल नंबर फिर से मल्टीप्लाई करना है 187 से. आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको इसको माइनस करना है. 185. यस यू आर राइट 185. तो इसका आगे का स्टेप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ. वो बराबर है तो यू प्लीज एक्नॉलेज. अदरवाइज गलत है तो मुझे बताओ. इट इज 185 टू द पावर ऑफ 11 into 146 bracket close mod of 187, mod of 187, mod of 187, mod of 187. Similarly, I can split now. Similarly, by using that formula, I can split now. Yes, I can split. Can I write down now? Pay attention. Can I write down now? 185 to the power of 2 to the power of 2 the whole power of 5 into 185 into 146. Now this will be taken as one number and this will be taken as other number. Bracket close mod of 187. Do you agree with this or not? Do you agree with this or not? 185 power to the power of 11. I have split into 185 to the power of 2, the whole power of 5. So 2 5s are 10 और 185 और ये 146 इधर और ये mod इधर और ये 187 इधर. Do you agree with this? ये नहीं समझ में आ रहा तो I will be happy to explain you once again. If it is okay. डायरेक्ट हाँ बोलो बोलो. सर वो डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, वापस स्प्लिट क्यों किया? हाँ मैंने इसलिए स्प्लिट किया क्योंकि 185 टू द पावर ऑफ 11 है ना. ये देखो 146 स्क्वायर का हमने लिखा है ना डायरेक्ट. लेकिन अगर 146 का डायरेक्टली टू द पावर ऑफ 23 रहता था वो बड़ा नंबर आता था. इसलिए मैंने क्या किया 146 स्क्वायर को स्क्वायर में लिखा. आप टू द पावर ऑफ 3 भी लिख सकते हो. आप 3 भी लिख सकते हो. देयर इज नो हाउ. लेकिन मैंने क्या किया फॉर सिंप्लिसिटी 185 टू द पावर ऑफ 11 को मैंने सिंप्लीफाई में लिखा है 185 टू द पावर ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 10 into 185 into 146. Now this will be taken as the one single term. So this term into this term mod of 185. That is nothing but a into b mod of c. Is it clear? Is it clear? सर वो प्रीवियस स्टेप में नहीं डाल सकते कि 185 mod 187 होल टू द पावर 11 वैसे? इसको नहीं वो सेकेंड लास्ट स्टेप पे ही ये वाला. हाँ आप यहाँ पे कैसा है 185 टू द पावर ऑफ 11 into 146 mod of 2. अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा 185 टू द पावर ऑफ 11 mod of 187. तो 185 टू द पावर ऑफ 11 आपको कैलसी पे करना पड़ेगा बाद में फिर आपको. ओके हाँ इसलिए आपने बराबर आपका क्वेश्चन बराबर है. लेकिन मैं चाहता था कि वो बड़ा टर्म ना मिले मुझे और बड़ा टर्म जो मिलेगा तो फिर कैलकुलेशन कैलसी पे करने को मुझे डिफिकल्ट जाएगा. देखो अल्टीमेटली ये सब है ना कंप्यूटर में होने वाला बिकॉज दिस इज अ एल्गोरिथम सेव्ड इन द कंप्यूटर.
लेकिन हमको मैन्युअली जब दिखाना पड़ता है ना, तो हम चाहते हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए उसको हम ब्रेक डाउन करें, तो इसलिए हम इसको ब्रेक करें। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so 185 to the power of 2 to the power of 5 into 185 into 146 mod of 187. So tell me, what is 185 to the power of 2? 34225. Yes, 34225. अभी मैं जो लिख रहा हूँ बराबर लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, मुझे बताओ। 34225 mod of 187 the whole power of 5 into 185 into 146 the whole square mod of 187. Can I write down? Tell me the value of this now. 34225 mod of 187. 4. Yes. So can I write down 4 to the power of 5? Yes or no? Yes, sir. अभी हाँ, अभी मुझे बताओ, अभी मैं मॉड यहाँ पे यूज करूंगा 185 into 146 मॉड ऑफ 187, 185 into, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो अब मुझे पहले बताओ 185 into 146 का आंसर क्या है? 27010. 2710 27010. mod of 187 the whole mod of 187. Can I write down this? Yes, I can write down this by the formula, क्योंकि मुझे इसका लेना है मॉड, बाद में b mod of c, तो इसका भी मॉड मुझे अलग से लेना है बाद में। अब तक मैं उसका मॉड नहीं ले रहा था, 146 का मॉड मैंने यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन अभी यहाँ पे मिला है 185 into 146, तो 185 into 146, so that is 27010 mod of 187, separate mod of 185, that is this. By see this one now, this one, all of you pay attention, this one जो मैंने आप पहले इक्वेशन लिख के दिया। अब तक मैं क्या कर रहा था? अब तक मैं ये यूज कर रहा था। अब ये स्टेप में, लास्ट स्टेप में मैंने क्या किया है? मैंने ये यूज किया b mod of n mod of n। इसलिए आप ये दोनों इक्वेशन लिखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अब तक मैंने ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ तक सॉल्व किया। अभी इसके लिए मैंने ये वाला ऊपर वाला लिया, तो इट इज 185 into 146, that is 27010 mod of 187. Okay, I will rub the above portion. अब मुझे बताओ 4 to the power of 5, 4 to the power of 5 is how much? 1024. Yes, 1024। मुझे बताओ 27010 mod of 187 का आंसर, इसका आंसर 82. yes। Can I say this one into mod of 187? Do you agree with this? Yes or no? I want answer from you, yes or no? Yes, sir. Yes. Now can I say again it is now this form, a into b mod of c, but can you see हम कितने नीचे आ गए? अभी हमको डायरेक्टली फिर से ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, अभी हम दोनों को डायरेक्टली ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं और उसका मॉड निकालते हैं 187 के साथ। तो मुझे बताओ 1024, या फिर एक काम करते हैं, हम ये कैलकुलेटर करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकाल के भी इसका आंसर निकालो और ये फॉर्मूला यूज करके भी आंसर निकालो। तो मैं क्या करता हूँ, ये फॉर्मूला यूज करके आंसर निकालता हूँ। कैन आई से इट इज 1024 mod of 187
into 82 mod of 187. 124 mod of 187 into 82 mod of 187. आपको लिखना है तो बाद में भी फिर से लिख सकते हो mod of 187 equals to, tell me the value of 124 mod of 187. Any one of you? One zero two four mod of 186. How much? 89. Yes, you are right. 89 into. Tell me the 82 mod of 187. 82. Yes. Bracket mod of 187. 187. अभी देखो ये 1024 into 82 ये नंबर बढ़ा रहा था, अभी वो छोटा करके देखो मैंने क्या लिखा है 89 into 82. 89 into 82. अभी आप छोटे नंबर पे आ गए हो तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो मुझे बताओ 89 into 82 is how much? into 82 is how much? 7298. यस, ये देखो मैंने लिखा है 7298 mod of 187. अब यहाँ पे डायरेक्टली आंसर बता सकते हो। अब अभी फाइनल आंसर बताओ। 5. 5. Yes. And what was the value of m which we have got? 5. 5. Yes. Can I say this 5 and the previous value? So can I say m is equals to 5, what we have assumed earlier, and from this we have got also the value of m is equals to 5. Yes or no? Yes, sir. So have you understood the flow? I want everyone, ये रिकॉर्डिंग मैं आज ही डालता हूँ, आज के आज ही आपको देखना है और प्रॉपरली समझना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? So that the bigger numbers, which are the bigger numbers? 185 to the power of 11. वो देखो कम करके करते करते देखो कम कितने हो रहे। ये देखो 1024 into 80. यहाँ पे भी मैं कर सकता था डायरेक्टली, यहाँ पे भी मैं कम डायरेक्टली लिख सकता था और आप कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। देयर इज नो हार्म। यस, हमको वहां तक लाना है जहां तक हम ला सकते हैं, सो दैट इट बिकम्स वेरी सिंपल टू डू द कैलकुलेशंस ऑन योर कैलकुलेटर। अदरवाइज हम डायरेक्टली ये कंप्यूटर में फीड करके डायरेक्टली हमको आंसर 5 मिल सकता था, बट वी हैव टू शो मैन्युअली हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एंड दिस, ये सब हम क्यों कर पा रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला जो मैंने रेड में लिखा है। So I want everyone to remember this formula as well as ये ऊपर वाला formula, as well as ये ऊपर वाला formula. Okay, मैंने यहाँ तक ये formula यूज किया है, उसके नीचे में मैंने ये formula यूज किया। So both the formulas are the different versions. Both the formulas are the different versions. I hope you have understood. Thanks God कि आज at least I have covered RSA. Okay, अभी next lecture में I will be starting with the practical for Huffman coding. I was supposed to complete Huffman coding today itself because I was having 1.5 hours. लेकिन आज नहीं हो पाया. So there is no problem. Tomorrow I will be taking Huffman coding. I will be explaining with Huffman coding. आपका Huffman coding I think DCOM में भी हुआ है. But this is with reference to the data comparison. Okay, data comparison. तो वो एंगल से हम देखेंगे कि Huffman coding क्या होता है। Okay, so if you have any doubt, any question, please ask me right now. मुस्कान या फिर प्रणव, आप दोनों में से कोई तो भी अटेंडेंस ले लेना। मुझे पकड़ के 53 प्रेजेंट है, so there should be 52 students. Okay. Okay ना? सर हाँ बोलो। सर मी घेतले अटेंडन्स। अच्छा प्रियंका होती का तू? ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। So if it is okay for you, you can leave the session. जिसको प्रॉब्लम है, you can just wait and you can ask me the question. Today recording I will send the recording.